हेलो। हेलो, रुको, अभी रुको। देखो थंबनेल क्या है। ठीक है ना? आप लोग क्लास में कब लाइव कर रहे हो क्या? ओके। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने अब तक पढ़ा व्हाट आर द प्राइमरी गुड्स, है ना? व्हाट आर द इंटरमीडिएट गुड्स, व्हाट आर फाइनल गुड्स। कल मैंने इसके साथ ही आपको ये भी बताया था व्हाट इज वैल्यू एडिशन। We discussed also about what is value addition, what is VAT, है ना? What is problem of double counting? These all has been discussed in previous class. Okay, मैंने इतना पढ़ा है, मतलब इसको डिस्कस किया है क्लास में। एनी क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस क्लास? आप लोग नहीं थे, कोई बात नहीं। इट विल बी रिपीटेड अगेन in further classes because these are basics and these will become um, again also. Okay, सेकेंड थिंग हमने ये भी डिस्कस किया था व्हाट इज डेप्रिसिएशन। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? ओके, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन मीन्स decrease in capital stock during the discussion. I told you that what is the meaning of logistics. What is the meaning of logistics? It is very very important and very contemporary word. Also, you can read this word in newspaper, um, on वीकली मंथली डेली बेसिस, है ना? आपको ये वर्ड अधिकतर देखने को मिलेगा, है ना? हर हफ्ते एक बार कम से कम, या महीने में एक बार कम से कम आपको ये पेपर में मिल जाएगा देखने के लिए। और गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू upgrade the logistic system of India. So it wants to uh, propose new logistics policy also, and it was scheduled to launch in 2020, but postponed, became postponed due to pandemic, है ना? आएगा। तो कल मैंने आपको केवल चर्चा में ही बताया था कि लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉजिस्टिक्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉजिस्टिक्स? एक टर्म आता है सप्लाई चेन।
ये वर्ड सुना है? व्हाट इज सप्लाई चेन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई चेन? ये तो ट्रांसपोर्टेशन हुआ ना? स्पीक लाउडली. ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सप्लाई चेन. ठीक है, ये सही है. क्रूड लेवल पे सही है, गलत नहीं. देखिए, हाँ बताएं. अच्छा, एक बात बताइए. ये जो टर्म है सप्लाई चेन, when will the any process of supply will occurred, will be happen. कोई भी आपूर्ति की प्रक्रिया कब होगी? सबसे पहले क्या होगा? मार्केट में डिमांड होगी, है ना? और जब डिमांड होगी देन सप्लाई होगी. इफ देयर इज नो डिमांड, if there is no demand, there will be no supply. If there is less demand, means there is less supply. If there is low demand and low supply, means less income. And if it is happening on the entire level of economy, then this condition is known as, this condition is known as recession. और सिंपल सी बात है भाई, अगर डिमांड है तभी सप्लाई होगी, पहली बात. सेकेंड थिंग, अगर डिमांड कम है तो सप्लाई कम होगी. इसका मतलब प्रोडक्शन विल आल्सो बी लेस. इफ प्रोडक्शन इज लेस, देन employment will also be less. If employment will also be in less amount, less quantity available, then the level of income will also at less level, on less level. And if this process is happening on the level of entire economy, then this is known as recession. Second thing, if demand is more very high, अच्छा, if demand is very high but supply is not very high, because if you have to increase supply rapidly, then you have to produce things very with in a fast manner, but this is not possible. Let's suppose that there is a huge demand of
potatoes, tomatoes, or other vegetables. But you can't fulfill the need or demand at same time with same speed, because in the production of these vegetables some time is required. तो जो आपने प्रोड्यूस किया वही तो सप्लाई करोगे. अब मान लो सप्लाई स्टेगनेंट या सप्लाई लेस, इसका मतलब प्रोडक्शन भी क्या स्टेगनेंट है या लेस है. डिमांड जब ज़्यादा होगी, इफ डिमांड इज हाई, it means people will start to pay the money, pay the prices based on bidding process, है ना. अब मान लो एक ही चीज, एक कमोडिटी है और उसकी डिमांड करने वाले 100 लोग हैं. देयर आर 100 पीपल्स who demand a say single thing, and this single commodity has a price of only 50 rupees. अब मुझे ये बताइए कि क्या ये एक्चुअली 50 रुपीज में बिकेगी. नो, दिस विल बी सेल आउट इन बीडिंग प्रोसेस. हो सकता है ये 50 रुपए की चीज 500 में बिक जाए, हो सकता है ना. मीन्स हाउ मच टाइम प्राइस वॉज इंक्रीज्ड 10 times. Understand why it happens? Why it is happening? Due to the scarcity of commodities. If there is availability of 100 commodities in market, then price would be sold on its equal price. अगर 100 वस्तुएं भी होती, अगर 100 वस्तुएं भी होती मार्केट में, तो क्या होता कि कीमतें बढ़ती नहीं, उसी कीमत पे बिकती जो उसकी एक्चुअल कीमत है. अंडरस्टैंड, है ना. ये कंडीशन क्या कहलाएगी? इन्फ्लेशन कहलाएगी. What this situation will be called? इन्फ्लेशन. मतलब देखो बहुत सिंपल सी बात है, डिमांड एंड सप्लाई, द, है ना, रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई एंड रिलेटेड प्रोडक्शन determines the price condition of prices of commodities in market. बाजार में वस्तुओं की कीमतें क्या होंगी, महंगाई होगी या मंदी होगी, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि बाजार में मांग क्या है और उसके तुलना में आपूर्ति कैसी है. This is very basic thing and it should be very very clear, and this is the crux of all inflation, all recession. आप जो भी पढ़ोगे सब में यही आएगा घूम फिर के. देखो असल में इकोनॉमिक्स में ना कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, अगर आपने उनको समझ लिया तो फिर सारी इकोनॉमिक्स क्या है उसके ऊपर इर्द गिर्द कंडीशंस को, अलग अलग कंडीशंस को दिखाएगी. अच्छा ये कंडीशन होगी तो ये होगा, ये कंडीशन होगी तो ये होगा. अंडरस्टैंड? इट्स ओके. If demand is high and supply is high, it is in balance condition. मान लो 100 लोग हैं, डिमांड ज़्यादा है और चीज़ें भी 100 हो जाएं, तो फिर वही हाल हुआ ना. फिर जो अपनी जो है सेम प्राइस पे बिकेगी. बीडिंग कब होगी? नीलामी की प्रक्रिया, ऑक्शन प्रोसेस कब होगा? नहीं, मैंने कहा अगर डिमांड ज़्यादा है और
हाँ, हाँ, ठीक, हाँ, हाँ, एक पर्टिकुलर टर्म होता है ना? स्टैगफ्लेशन भी बोलते हैं, देयर आर वेरियस टर्म्स। ना, ना, स्टैगफ्लेशन। अच्छा, एक चीज़ ये भी समझिए कि अलग-अलग टर्म जो है ना? जब हम जब उस चैप्टर पे जाएँगे तो उसको देखेंगे कि व्हाट टर्म्स आर यूज्ड फॉर दैट पर्टिकुलर कंडीशन। इन्फ्लेशन है, डिसइन्फ्लेशन है ना? उसके बाद आपका स्टैगफ्लेशन रिसेशन है, मेल्टडाउन है ना? तो दीज़ आर सो मच कन्फ्यूजिंग, अंडरस्टैंड? तो जब हम उस चैप्टर को डील करेंगे तो वहाँ उसको बहुत ही इस तरीके से समझेंगे कि कंफ्यूजन ना हो। इट इज़ अ बिजनेस साइकिल। इट इज़ अ बिजनेस साइकिल और उसको हम बहुत डिटेल में समझेंगे। व्हाट विल बी द व्हाट विल द दिस कंडीशन, व्हाट विल बी द term for this condition, what will be the term for this condition when things are coming. आप मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास जो है 12th की अ, उसको पढ़िए, है ना? हाँ, देख के उसको पढ़िए। ओके। अच्छा, मैंने ये इसलिए बताया आपको कि ये समझ में आ जाए कि कोई भी डिमांड जब होगी तभी सप्लाई होगी। सप्लाई विल सप्लाई इज डिपेंडेंट ऑन डिमांड। इसका मतलब ये है कि ये कहना कि जहाँ चीज़ें बन रही हैं वहाँ से फिर दूसरी जगह जाना, फिर तीसरी जगह जाना, है ना? ये सप्लाई चेन नहीं, नहीं, ये नहीं है। सप्लाई चेन का मतलब ये है कि टू ट्रांसफर द कमोडिटी फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन इज नोन एज सप्लाई चेन। उत्पादन के बिंदु से उपभोग के बिंदु तक वस्तुओं को, सेवाओं को पहुंचाना क्या है? आपूर्ति श्रृंखला है। और ये शुरू कब होती है? समझिए, ये शुरू कब होती है? जबकि आप डिमांड करते हो। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी ऑनलाइन पोर्टल से, किसी ऑनलाइन जो है कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वहाँ पे पोर्टल है, वहाँ पे जाके आपने किसी भी आर्टिकल के लिए ऑर्डर किया, मीन्स यू जनरेटेड डिमांड। तो जैसे ही आप डिमांड कर आपने यहाँ पे बैठ के क्या किया कि भाई हमको ये चीज़ चाहिए। यहाँ जब डिमांड होगी तो ये डिमांड पहुँचेगी इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, ये भेजेगा प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर क्या करेगा, इसके पास भेजेगा, ये भेजेगा अपने चैनल के थ्रू कंज्यूमर तक। अब इसमें बहुत सारे लोग होंगे ना, यहाँ से चीज़ें जाएंगी किसी और सेंटर पे, वहाँ से फिर प्रोसेस होके किसी और सेंटर पे जाएंगी, है ना? दिस इज सप्लाई चेन। ठीक है।
अब लॉजिस्टिक इज पार्ट ऑफ सप्लाई चेन, कल हमने इस पे डिस्कस किया था, ठीक है। एंड वी विल डिस्कस ऑन द लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन अगेन इन डिटेल, है ना। जब किसी और टॉपिक को पढ़ रहे होंगे तो हम उस पे ये देखेंगे कि क्या इसमें अंतर है, ठीक है। अ, या क्या इसकी विशेषताएं हैं। अब मैं अपने मेन टॉपिक पे आता हूँ, एक बार देख लीजिएगा, याद रखिएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन द reference of emerging India, for emergence of India as a economic power. Logistics development is essential. सरकार यूं ही नहीं बंदरगाहों को लेके, पोर्ट्स को लेके, रोड्स को लेके, है ना, बहुत ज़्यादा रेलवेज को लेके, है ना, बहुत ज़्यादा आपको एक्टिव दिखती है, बिकॉज गवर्नमेंट इज नॉट मेड फॉर गवर्न अस। सरकार हम लोगों पर शासन करने के लिए नहीं बनी है। सरकार इज अ फैसिलिटेटर इन करेंट टाइम पीरियड, इन प्रेजेंट। आज के समय में क्या है, सरकार सुविधा प्रदाता है। गवर्नमेंट इज अ वेलफेयर स्टेट एंड अ फैसिलिटेटर। बात समझ में आ रही है। तो सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, उसका काम क्या है। 1991 के बाद जो नीतियां अपनाई गई उसमें क्या है, सरकार इज रेगुलेटर, फैसिलिटेटर। वो नियामक है और सुविधा प्रदाता है। वो मैच खेलने के लिए फील्ड देगी, पिच तैयार करा के देगी, उसके बाद रेफरी भी बन जाएगी, लेकिन खुद खेलने नहीं जाएगी। और जो खेल बिगाड़ेगा या जो खेल के नियम का उल्लंघन करेगा उस पर पेनल्टी भी लगाएगी, येलो कार्ड भी दिखाएगी। अंडरस्टैंड, है ना। सो लॉजिस्टिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हम इस पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज लॉजिस्टिक्स, what is the meaning of logistics, what is the meaning of supply chain, because these are very essential and going to be more and more and more essential in further years. Okay, जनाब, किचन में वाटर एंड पानी, पानी तो है, कल पानी साफ है ना, ठीक। हम्म, कल हमने इस पे डिस्कस किया था, फिर से एक बार डिस्कस कर दे रहे हैं, है ना। व्हाट आर कंजम्पशन गुड्स, what are consumption goods are consumer goods, that goods are used which are used with the sorry, the that good those goods which are used directly by consumer, है ना, and used finally, मतलब जिसे कंज्यूमर उपयोग में तो लाता है और आखिरी तौर पे उसका इस्तेमाल किया जाता है।
इसके बाद उसका कोई और इस्तेमाल बचता नहीं है। जैसे हम जब भी ब्रेड खाते हैं, जैसे ही ब्रेड खाया देन इट वैनिस्ड आउट फ्रॉम सिनेरियो, है ना। इसका मतलब दोज गुड्स which are directly used for the satisfaction of human wants, हमेशा याद रखिएगा, any production, any consumption, any type or any type of activity or activities are happening only to fulfill the need or desire of human being. And what is the reason why only the final aim is to satisfy the need of human being? Because we have very scarce resources, and with the use of this scarce resources we have to satisfy a lot of a various type of needs. हमारे पास संसाधन बहुत सीमित हैं और हमें उन्हीं संसाधनों के द्वारा क्या करना है, बहुत सारे लोगों की बहुत तरह की जरूरतों को क्या करना है, पूरा करना है। और अब क्या है, वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को भी ध्यान में रखना है ना। वी हैव टू आल्सो keep in mind the needs of next coming generation while we are consuming goods or services. Means we are using our limited and scarce resources, and what is the term used for that type of डेवलपमेंट, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगर हम ऐसा विकास करें जिसमें हम अपनी ज़रूरतों को तो पूरा करें ही साथ आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखें। वी आर सेटिस्फाइंग आवर नीड्स with the consideration of needs of next coming generation. This is known as sustainable development. Understand? और इसमें कुछ बहुत अलग से तो समझना नहीं है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, we have scarce resources which which will be more and more and more scarce in future, because they are continuously in use, they are in continuously in use of production process, वो लगातार जो है उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयोग किए जा रहे हैं। सो दीज वुड बी डिक्रीज डेफिनेटली। भाई आप एक चीज समझो ना कि आप लोहे का इस्तेमाल करते जा रहे हो, यू आर यूजिंग आयरन कंटिन्यूअसली on daily basis, it means this will continuously decreasing, the deposits of iron ore is continuously decreasing. It means this scarce resource will be more scarce in next 30 years and will be more and more scarce in next 50 and 60 years, है ना। माना ये जाता है कि आज के समय में दुनिया भारत के पास इतना कोयला बचा है जो हमारे अगले केवल 30 साल की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकता है। अच्छा ये बताइए, हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, इसका मैक्सिमम पोर्शन कहाँ से आता है? थर्मल पावर से आता है। एंड थर्मल पावर इज
प्रोड्यूस थ्रू फॉसिल फ्यूल्स, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। जीवाश्म ईंधनों को जलाने से क्या बनता है? थर्मल पावर बनता है। मीन्स if we are using coal, petroleum or diesel, in that process we get thermal power, thermal electricity. अगर 30 साल के लिए ही कोयला बचा है तो 30 साल बाद क्या होगा? हमारी ही जिंदगी अंधेरे में चली जाएगी, आने वाली जिंदगी पीढ़ियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। So what is necessity of the time? What is need of the time? Use the goods, use the scarce resources with rationality. Your consumption should be rational and justified. It is very important line, and it should be keep in mind that consumption of resources should be very rational and totally justified. जो भी आप उपभोग करें संसाधनों का, वो क्या हो? वो तार्किक हो, आप उसे जायज ठहरा सकें कि नहीं इतनी ज़रूरत थी तो इसका इस्तेमाल किया। अगर आप नहाने के लिए 5 बाल्टी पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो देन इट इज़ नॉट रेशनल एंड नॉट जस्टिफाइड। आप किसी भी तरह से ये नहीं कह सकते कि नहीं ज़रूरत थी, 5 बाल्टी से नहाना ज़रूरी था। 5 बाल्टी पानी की जगह आप 2 बाल्टी 1 बाल्टी पानी से भी तो नहा सकते थे। भाई अगर हम 2 बाल्टी की बात करें तो इट्स सफिशिएंट वाटर फॉर एनी सिंगल पर्सन। So use of resources should be very, very rational and justified. And this is the procedure of sustainable development. If you are not adopting this, if you are not adopting the process, sorry, if you are not adopting this concept, you can't ensure तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो किसी भी तरह से आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल नहीं कर सकते। बात समझ में आई? ठीक है, तो व्हाट इज कंज्यूमर गुड ये समझ में आया। जिसका उपभोक्ता क्या करे? सीधे तौर पे इस्तेमाल करे, पहली चीज। और किस लिए इस्तेमाल करे? अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, विच आर यूज डायरेक्टली बाय द कंज्यूमर फॉर his own, his or her own needs satisfaction. Okay, like ice cream, milk, vegetables, and houses, car, everything. These are consumer goods. Okay, यहाँ तक कल पढ़ाया भी था, इस पर हो गया था। अब देर आर अरे हाँ यार, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा तेज, चूंकि रिवीजन कर रहे हैं इसलिए स्पीड थोड़ी तेज ज़्यादा होगी। What are the types of consumer goods? First is consumer durable, है ना? और लास्ट इज सिंगल यूज्ड कंजम्पशन गुड्स, है ना? अब समझिए, व्हाट आर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं।
टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं। और ये पढ़ने में आएगा जब आप नेशनल इनकम पढ़ोगे तो वहाँ आएगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। व्हाट आर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स? Those goods which will be in use of consumption consumption for a longer period, for a longer period, means that goods which provides you their services for longer period is known as consumer durables. Means 10 years, 50 years, or 100 years, as like this. Okay, what are the example of consumer goods, sorry, durable consumer durables? As like this: house. We consume this good hun. We regularly we use this कंजम्पशन गुड ऑन रेगुलर बेसिस। हम इस जो है उपभोक्ता वस्तु का इस्तेमाल दैनिक रूप में करते हैं ना। लेकिन ये जो अब इसकी जो सेवाएं हैं ये हमें लंबे समय तक मिलती रहेंगी। इट विल प्रोवाइड इट सर्विसेज फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड, मोर देन 10 years, 20 years, 25 years, है ना। अब जैसे आप एक कार लेके आते हो, दैट इज कंज्यूमर ड्यूरेबल बिकॉज इट विल नॉट बी फिनिश्ड और फिज्ड आउट इन अ सिंगल कंजम्पशन प्रोसेस। ये एक बार के प्रयोग में तो खत्म नहीं होनी ना, या इट विल बी नॉट फिनिश्ड इन 10 times ऑफ कंजम्पशन प्रोसेस। ये 10 बार यूज करने पे भी खत्म नहीं होगी। अंडरस्टैंड? अब वो अलग बात है, आप ले जाके पेड़ में ठोक दो पहली ही बार में, है ना, और उसके परखच्चे उड़ जाए तो वो एक अलग चीज है। अंडरस्टैंड? These are how the houses as, as like this plant and machines. These are also plant or machine are also durable things, consumer durables. Am I right? Am I right? Plant and machines are also consumer durables. Ma'am, what's your name? What's your name? Salpna. तो मुझे ये बताइए, plant or machines are, I am saying that plants and machines are or machineries are consumer durables. Is this statement true or false? I am repeating it. I am saying that plants and machineries
okay, which are used in that particular plant are consumer goods. This statement is true or false? I, I I am saying that these are consumer durables. प्लांट और मशीन टिकाऊ भोक्ता वस्तुएं हैं या नहीं है? ये ड्यूरेबल्स तो हैं, पर कंज्यूमर गुड थोड़े ही हैं, दे आर प्रोड्यूसर गुड्स। मतलब सारी कहानी होने के बाद आप ये कह रहे हो कि नहीं, हाँ है। मैं 4 बार पूछ रहा हूँ कि ध्यान दो। वाई आई एम रिपीटिंग इट? बिकॉज दे आर नॉट used in the process of consumption, they are used in the process of production. If you are using house for production process, then this will be known as production durables. जैसे this house will be considered or classified as a production durable or capital, understand? लेकिन अगर हम उसका रहने के लिए इस्तेमाल करने लगे, देन दिस विल बी कंज्यूमर प्रोडक्ट। एंड विच टाइप ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट? ड्यूरेबल कंज्यूमर प्रोडक्ट, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड, अंडरस्टैंड? शब्दों को बहुत ध्यान से समझा करिए, क्योंकि अगर आपने, कहते हैं शब्द बड़े महान होते हैं और इनकी बड़ी महत्ता होती है, दे हैव वे these have a lot of importance. If you have a better understanding of word, any particular word, है ना? अब जैसे मैंने आपको कहा इंक्लूसिव ग्रोथ, if you know about the meaning of inclusive and you are also aware with the meaning of growth, then what is the problem? Inclusive is a adverb, and it can be used as adjective also. Inclusive means process of inclusion. Growth means upliftment of people's life or increase in income. Then if people's income is increasing, if people's income is continuously increasing, then they are in the process of growth. And in any economy, if every person is included in the process of growth, then this will be known as inclusive growth, because there is inclusion process. ओके, अब इसमें कौन सा ऐसा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है? देखिए, ये व्यवहार से जुड़ा सब्जेक्ट है, दिस इज बिहेवियरल सब्जेक्ट, सो यू हैव टू डेवलप द approach to understand concepts with or in behavioral method, understand? empirical method, आपको एक अनुभवजन्य अनुभविक पद्धति भी बोलते हैं। आपको कोई चीज समझना हो ना, गरीबी समझना हो, भूख समझना हो, खुद 2 दिन बिना खाए रहिए, भूख समझ में आ जाएगी। और गरीबी वाकई क्या होती है, जिस दिन पैसा खत्म हो जाए, घर से पैसा मत मंगाइए,
और एक हफ्ता बिना पैसे के रह लीजिए, गरीबी क्या होती है समझ में आ जाएगी। क्योंकि in the absence of money you will not be able to purchase any type of goods or services, and without availability of goods and services you will not in the condition to fulfill your any type of need. Either this is your hunger, or your transportation need, or your medication need, or any type of need. This is the condition of poverty. You are creating this situation for understanding. Some people spend their whole life in such type of condition. तो किसी चीज को समझने का एक तरीका ये भी है, एम्पेरिकल मेथड, अनुभविक पद्धति। और इस तरह के विषयों में जब आपको चीजों को समझना हो ना, तो खुद को उस जगह पे रख के सोचिए कि मैं होता तो क्या करता। जब आपसे सॉल्यूशन पूछे जाते हैं ना, तो रख के सोचिए कि अगर मैं वहां पे होता तो क्या करता। ओके, so it is confirmed that what is the concept of consumer durable. What is consumer durable? That the consumer good which are be you in the existence for longer period in process of consumption, है ना। वो वस्तुएं जो उपभोग की प्रक्रिया में लंबे समय तक टिकी रहती हैं, प्रोवाइड दियर सर्विसेज फॉर लॉन्गर पीरियड, जो अपना जो है अपनी सेवाएं बहुत लंबे समय तक देती हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर ड्यूरेबल। अच्छा ये बताइए, दिस विल बी कॉस्टली आर लेस कॉस्टली? नॉट डिपेंड्स ऑन डिमांड। ओके, दीज आर डिपेंड्स ऑन डिमांड। पर एक चीज समझो ना, बहुत सीधी सी बात है कि इफ वी आर टेकिंग इन अ लॉन्गर टाइम पीरियड, then there will be a certain type average demand. If I am taking 50-year period, I am taking 25-year period, तो एक एवरेज डिमांड तो बना ले सकते हैं ना। व्हाट इज द सिंगल यूज कंजम्पशन गुड? What is the single use consumption goods? That goods which can be used in single time for consumption process. That good, that type of goods which can satisfy our needs in a single consumption process. ओके, वो वस्तुएं जो हमारी ज़रूरतों को सिर्फ एक बार पूरा कर सकें, उपभोग प्रक्रिया में सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो सकें, दैट गुड्स विच कैन बी यूज्ड एट सिंगल टाइम, ओनली वंस टाइम इन कंजम्पशन प्रोसेस, आर नोन एज सिंगल कंजम्पशन गुड्स। जैसे रोटी, ब्रेड, खाया खत्म। बिस्किट्स, ऑल ऑल प्रोडक्ट्स, ऑल गुड्स, है ना, आर are all food products are single use consumption goods. Okay, and there are lots of things. One third important type is semi durable consumption good.
Semi durable consumption goods. Concentrate here. Look here. Look on the board. Semi durable, which is not totally durable. The good which has not properties of totally durable consumers, consumer durables, and which have also not totally single used consumption goods, means which have the attributes of both types of goods, है ना? अब थोड़ा सिंपल तरीके से समझो। वो वस्तुएं, वो चीजें जो हमारे प्रयोग में बार बार आती हैं और अपेक्षाकृत एक लंबे समय तक प्रयोग में रहती हैं, एक लंबे समय तक उपभोग में रहती हैं, इनका एक लंबे समय तक उपभोग किया जाता है, पर बहुत ज्यादा लंबे समय तक उपभोग नहीं किया जाता। दैट गुड्स विच आर यूज्ड फॉर द satisfaction of need for a longer period, comparatively for a longer period, they will be in use for comparatively longer period, but not for a very longer period, as like your cloth. Your clothes are semi ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। भाई आप एक शर्ट में से, है ना, हम जो कपड़े पहनते हैं वो 1 साल 2 साल, बहुत पहन लिया 3 साल, है ना। अब ये अलग बात है कि बचपन के भी कुछ लोगों के स्वेटर वगैरह रखे रहते हैं, वो ये, हाँ पेन, ये पेन, आप इस पेन को किस में डाल रखोगे? सेमी ड्यूरेबल में, बिकॉज इट विल बी नॉट phased out in a single use, but it can't be used for very longer period. It can be used for a week, a month. It depends on your writing need. Okay. So these are broadly three types. Okay. जहाँ समझ में ना आए पूछ लीजिएगा। ओके, ड्यूरेबल ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। अच्छा, विच कंजम्पशन गुड वुड बी मोस्ट कॉस्टली? Durable consumption goods would be most costly, and single used consumption good would be less costly। समझ रहे हो? तो जितना जितना देर तक वो, जितने लंबे समय तक वो सर्विस देने वाला है ना। अब यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है? लग्जरीज। भाई अब आप एप्पल का फोन ले लो, या बहुत सारी कंपनीज का फोन आने लगा 1-1 लाख का, है ना। This will not give you service for 20 years or 10 years. This will give you service for maximum 2 3 4 year, and this will be semi durable. This will be semi durable, not durable, but it would be very costly. Because why? Because this is luxury. One another concept is commodity fetishism.
I think that Manish sir explained this concept in class. कम्युनिटी फेटिसिज्म जो आपको सीट दी गई होगी उसको एक बार पढ़िएगा, मिल जाएगी. यू आर टेकिंग क्लास ओनली फॉर पीटी. तो अभी उस सर शुरू करेंगे ना उसमें. सर विल टेकिंग, हाँ, सर विल स्टार्ट टू टेक क्लासेस आफ्टर सम डेज. ओके. And she's very very he has a very, you can say that his depth of knowledge is very, I can't have a proper word for the dimension of his knowledge. And his ability of interdisciplinary teaching is so much good that बहुत सारे लोगों को जब वो पढ़ाते हैं ना तो लोगों को लगता है पढ़ा क्या रहे हैं. असल में वो कंसंट्रेट करके सुन नहीं पाते हैं. अगर आप उनकी क्लास को कंसंट्रेट करके सिर्फ सुन लो ना, और उनकी क्लासेस के वीडियो को आप लगातार 2-3 बार सुन जाओ, आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ पेपर पढ़ लो, बाकी न्यूज़पेपर्स काम हो जाएगा. यू विल गेट मोर नंबर्स इन इकोनॉमी सेगमेंट ऑफ जीएस. Means he has a very very salient and good knowledge of economics, psychology, sociology, public administration, and so on. Okay. So when he will start to take classes, take it very very seriously. जब वो पढ़ाना शुरू करें तो उनकी क्लास को बहुत सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि असल में वो आपको लगेगा कि तो बहुत टफ चीज़ है, पर वो इतना आसान होता है और वो इतने आसान तरीके से पढ़ाते हैं. ज़रूरत होती है कंटिन्यूअसली उनको सुनने की. और चूंकि इंटरलिंक करते हैं तो दिमाग को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखने की ज़रूरत होती है कि कहाँ से कहाँ लिंक किया है, क्योंकि यू हैव टू डू आल्सो सेम थिंग इन पेपर and you have to learn this ability. Understand? Non durable are single used consumption goods. ये भी हो गया. Services, what are services? What are services? What are services? That production or that consumption goods which are not, which are not observable, are not physical. Understand? As I am teaching you, I am giving you something which is not visible, but this is making, or this is accumulating some knowledge in your mind. Understand? This is service. Okay. Only I have told you that only two things, two types of commodities can be produced. One thing is goods. Second thing is services. Okay. Only goods and services can be produced, so only goods and services are included in national income accounting. And as I told you that why we take the value of final goods, because the value of final good contains the value of primary and intermediate goods also. जब ये पढ़ाया था आप लोग क्लास में थे कि नहीं? ठीक है, आगे जब नेशनल इनकम पढ़ाएंगे तो इसको देखेंगे. ठीक है.
What are capital goods? What are capital goods? We have learned many times that there are four factors of production. What are the four factors of production? There are four factors of production. Understand? What are they? First is land, second is labor, third is capital, fourth is entrepreneur. चार होते हैं ना? भूमि, श्रम, पूंजी और, तो ये पूंजी क्या है? पूंजीगत वस्तुएं क्या हैं? हिंदी में क्या बोलेंगे? पूंजीगत वस्तुएं. Capital goods. What are the capital goods? These are such goods which are used in the process of production. First thing, these are one of the factor of productions. ये उत्पादन के साधनों में से एक होती है. ठीक है, होती क्या है ये देखिए. कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड एसेट. What are these? Capital goods are fixed assets. What are fixed asset? Asset का मतलब क्या है? संपत्ति. फिक्स का मतलब जो स्थायी हो. What are fixed assets? नहीं, अभी इसको छोड़ो ना, प्रोडक्शन को छोड़ो. आई एम आस्किंग दैट व्हाट इज फिक्स्ड एसेट्स. लैंड, योर प्रॉपर्टी, है ना, योर हाउस, बिल्डिंग. नहीं नहीं नहीं, no, I'm not saying that they can't move. I'm saying that these are fixed, means these have a longer life span. Understand? Okay, huh. And these are assets. These are assets. These have some inherent values. Okay, that goods which has the nature of fixed assets are known as capital goods. Okay, आप प्रोड्यूसर्स, ध्यान दीजिए, आप प्रोड्यूसर्स, and these are used in production process. Capital goods are used in production process. For capital goods can be used in production processes. It may be possible that these are not in used, that they are not in the mm, use of production process at present, but can be used in
production process. As like jewelry, these are fixed assets, these are assets. But this can be converted in gold asset. Huh. And this can be used, this can be changeable in another products. Understand what is money, what is rupees? It is a medium of exchange. It can be changed in another form. Gold can, you can change gold in with another article, another good, like property. Okay, it means these are the, I have told you that capital goods are one of the factor of production. ये उत्पादन के चार साधनों में से एक हैं। इसका मतलब ये किस तरह की वस्तुएं हैं? दे आर नॉट कंजम्पशन गुड बट प्रोड्यूसर गुड। ये उत्पादक वस्तुएं होती हैं। कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, नॉट कंजम्पशन गुड्स। As like that, plant and machineries are examples of capital goods. These goods are used by the producer either for the replacement of capital stock, addition to the capital stock, as अब एक एक को समझते हैं यहाँ पे। Addition to capital stock as fixed assets, capital goods. What is capital stock? What is capital stock? What is stock? If we collectively uh, consider all our capital resources or capital goods, these are known as capital stock. Okay, so what can be used are capital goods addition to capital stock. भाई ठीक है, हम अगर इसका यूज नहीं कर रहे हैं तो ये कैपिटल स्टॉक को बढ़ाएगी। ओके, सेकेंड थिंग, इट कैन बी यूज रिपीटेडली इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जो कैपिटल गुड होगी, मैंने कहा ना फिक्स्ड एसेट है, फिक्स एसेट है और कंज्यूमर गुड नहीं है। इसका मतलब ये जो है लंबे समय तक सरवाइव करेगी एंड इट कैन प्रोवाइड यू इट्स सर्विसेज फॉर लॉन्गर पीरियड, लाइक मशीनरीज। अब प्रिंटिंग प्रेस में देखो, अगर प्रिंटिंग प्रेस में आप देखिएगा तो एक प्रिंटिंग मशीन होगी और पेपर होगा। These both are used for production. So they both are production or producer good. It should be very clear that they both are producer goods, because प्रिंटिंग मशीन एंड स्वप्न यहाँ देखिए,
Look here. Production in the printing of newspaper, printing machine and paper both are used. So both are producer goods. उत्पादक वस्तुएं हैं ना. But which one of these is capital good? मैंने कहा था ना, कैपिटल गुड्स आर फिक्स एसेट्स. कैपिटल गुड्स आर फिक्स एसेट्स. And which is fixed asset in these? Printing machine. It is producer good or production good and capital good also. So if I will tell that जो न्यूज़पेपर होगा ना वो कंज्यूमर गुड होगा. हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इन दोनों की. These both integrants, these both goods which are being used in the process of production. Okay. Question is that every production, या और इसको ऐसे लिख सकते हैं, all capital goods are consumer, sorry, are producer good, but all producer goods are not capital good. यहाँ पे क्वेश्चन देखो, कल का ये क्वेश्चन भी था ना. क्या दिया था क्वेश्चन, क्या लिखा था? मैंने उसको पढ़ो. क्या है? ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स नॉट सॉरी आर नॉट कैपिटल गुड्स. हिंदी क्या है इसकी? कि सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं होती हैं. सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं होती हैं, लेकिन सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती हैं. समझ में आ रही बात क्यों नहीं होती है? देखिए, आल मैंने कहा ना, कैपिटल गुड्स आर पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स and raw materials are also parts of producer goods which are not capital good. Means producer goods is a broader. These are capital goods.
These are raw materials. This diagram is not correct. इसको ऐसे समझिए, वेन डायग्राम समझाने लगे तो टाइम काफ़ी लगे। ये समझ में आया है? नहीं समझ में आया तो बताएं, फिर से इसको एक्सप्लेन करते हैं। बहुत सीधी बात है, ऑल कैपिटल गुड्स आर included in producer goods. Understand? R capital R part of producer goods because these are fixed assets and they are being used in the process of production, and they will deliver their service for longer period. But there are some producer goods also which can be used only one, two, or three, or four times. Raw materials. क्या पेपर कैपिटल गुड होगा? नहीं, इट इज नॉट फिक्स्ड एसेट. व्हाट इज कैपिटल गुड? विच इज फिक्स्ड एसेट. पेपर इज नॉट फिक्स्ड एसेट because it can be used as for a single time of production. प्रिंटिंग मशीन को तो आप बार बार इस्तेमाल करते हो ना, लेकिन आप पेपर जो जिस पे एक बार छप जाएगा उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाओगे. सो इट इज रॉ मटेरियल. जैसे फैब्रिक ले लो, टेलर की दुकान पे, है ना, टेलरिंग मशीन होती है. आप उस पे जो टेलरिंग मशीन है उससे बहुत सारे कपड़े सीते हो. एक फैब्रिक से अगर एक शर्ट तैयार हुई तो दैट इज रॉ मटेरियल. अब आप ऐसा तो है नहीं कि फिर उससे अपने लिए ही दूसरी शर्ट तैयार कर लोगे. दिस फैब्रिक कैन बी यूज्ड फॉर सिंगल टाइम, but this machine can make another shirt for you. This fabric can't make you give you another shirt. Machine can give you another shirt. So tailoring machine is a capital good. Fabric is not a capital good. It is a. बात समझ में आई? अब इसको और दूसरे भी तरीके से समझ लो. जैसे अब अपने को लेके देखो कि आप जो है पेन और कॉपी का इस्तेमाल कर रहे हो. यू आर यूजिंग पेन एंड कॉपी. You can use one paper sheet for only one time, but you can use your pen many times. So for you, pen is capital, semi durable, है ना. But paper is single, है ना, single used product, one time usable product. ओके. तो देखो, अगर तुमको प्रोडक्शन करना है, तुमको लिखना है, तो यूज तो दोनों को करना पड़ेगा ना. हाँ. अब दोनों के रेफरेंस में देखो तो ये हैंड जो है वो कैपिटल गुड है ना. पेन क्या हो गई? पेन जो है वो. और लेकिन एक चीज ध्यान दो ना, समझो, लिसन मी, लिसन मी. योर हैंड इज नॉट अ गुड, है ना. लिसन. हाँ. फॉर राइटिंग प्रोडक्शन, if we are taking writing as a production process, then for that process you can use your paper sheet for only one time, but you can use your pen many time.
your value of your pen is more than a single paper sheet. Why? Because your pen can deliver more service, more durable. It is fixed for some time period. Understand? So it is fixed asset. Fixed asset is known as capital goods. Okay, both are producer good, but pen is capital good and producer good both. Paper is not producer and capital good both. गुड्स बोथ. बात समझ में आई? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इसको थोड़ा इन डिटेल बताया. जाके रूम पे देखे थे, मैंने कहा तो देखने के लिए, है ना? चलो आगे देखते हैं. अब देखिए, वन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल गुड्स, ओनली दोज only those fixed asset or producers are taken as capital goods which are used in process of production for several years and which are of high value. है ना? So what are the two characteristics of capital goods? First is fixed assets, second is of high value. Of high value. है ना? अब look at here. Even nut and bolts and nails or screws are used for several years, but these are not capital goods. भाई देखो, जैसे ना नट बोल्ट जो यूज होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, हम उसे भी तो कह सकते हैं ना कैपिटल गुड. लेकिन ऐसा नहीं है कि हर वो चीज, हर वो वस्तु जो लंबे समय तक जो है यूज प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो सके, उसे आप कैपिटल गुड बोल दोगे. कैपिटल गुड शुड बी फिक्स्ड एसेट एंड ऑफ हाई वैल्यू. इफ it can clear both criteria, then it can be classified as capital good. Okay. फिजिकल पॉलिसी जब पढ़िएगा आप, तो वहाँ पे दो तरह का रेवेन्यू और दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं. देर आर टू टाइप्स ऑफ रेवेन्यू एंड टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर. व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? That expenditure of government which will build up or make or construct or create such fixed assets which can facilitate production process or which can provide social services for
some sections of societies. कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहेंगे? पूंजीगत व्यय किसे कहेंगे? सरकार कुछ स्थायी परिसंपत्तियां निर्मित करती है जिससे दो चीजें हों, या तो वो उत्पादन में सहायक हो और या फिर उससे समाज के किसी कुछ लोगों को कुछ सामाजिक सेवाएं प्राप्त हों। जैसे सरकार स्कूल बनाएगी तो कुछ बच्चों को शिक्षा मिलेगी ना। तो स्कूल की बिल्डिंग क्या है? फिक्स एसेट है ना। रोड क्या है? फिक्स एसेट है। रोड विल बी यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस, and school building will provide social service for children. Okay, to children. Understand? So why it is classified as capital expenditure, and why what is meaning of capital revenue? वहाँ आप देखोगे that revenue which is earned by the disinvestment are taking debt or borrowing. समझ रहे हो आप? What is uh, expenditure receipt? Sorry, what is capital receipt? That income which is obtained through disinvestment. And what is disinvestment? It means government is selling out its fixed asset. सरकार अपनी कुछ स्थिर पूंजियों को बेच रही है या उसमें से अपनी पूंजी को निकाल रही है। तो स्थिर पूंजी का निर्माण करना कैपिटल फॉर्मेशन, और उस पे खर्च करना कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसमें लगा पैसा निकाल लेना डिसइन्वेस्टमेंट। एंड उससे जो पैसा मिला वो क्या हुआ? डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा मिला वो क्या हुआ? कैपिटल रेवेन्यू, सॉरी कैपिटल रिसिप्ट। अंडरस्टैंड? बात समझ में आ रही है? समझ में आई कि नहीं स्वप्ना? यू आर लुकिंग कंफ्यूज। आई एम से हाँ मैं बता रहा हूँ। आई एम सेइंग दैट व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल मीन्स फिक्स एसेट्स। What are fixed assets? What are fixed assets which will provide services for longer period in production process. Understand? And it should be always clear that capital goods are not consumer good, because these are factor of production, है ना? One of the factor of production. So it is a producer good. Understand? As like road, railway, building, bridge or machineries,
These are capital goods. Means this should have the characteristics of fixed assets nature. And what is the revenue or a budget? What is the budget of government? If we will break down the budget, it can be break down into segment. First is known as income, second is known as expenditure. This can be classified in two categories: revenue income or revenue receipt. Second is known as capital receipt. Expenditure can also be classified in two groups. First is known as revenue expenditure, and second is classified as capital expenditure. What is capital expenditure? That expenditure or that expenses, those expenses of government which creates capital goods are fixed assets are infra related infra facilities are social service related infra. मतलब सरकार कैपिटल गुड्स को क्रिएट करने के लिए जो खर्च करती है वो क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसमें सरकार क्या कर रही है? फिक्स्ड एसेट्स बना रही है। अब वो दो तरीके का हो सकता है, या तो प्रोडक्शन ओरिएंटेड हो या सोशल सर्विसेज ओरिएंटेड हो, है ना? समझ में आई बात? सरकार जो कैपिटल क्रिएशन पर खर्च करती है, दैट एक्सपेंडिचर इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, capital expenditure means creating fixed assets, and these fixed assets can be of two type. First is production oriented, like infra creation. Second, social services oriented, like school, college, hospitals, and many community buildings. Okay, ये समझ में आया? Why it is called capital expenditure?
because government is bearing expense for creating some fixed assets or creating some capital goods which can facilitate production process or can provide some basic facilities, social services to marginal groups of society, okay, or other section of societies like school for children's, like hospitals, government hospitals for public, and understand. And why it is known as capital receipt? आप समझो, that revenue, those revenue which is being earned through selling of governments selling of governments fixed assets or capital goods. Capital goods. ध्यान से देखिए, वो इनकम जो सरकार को अपने फिक्स्ड एसेट कैपिटल गुड्स को बेचने से मिल रही हो, एंड विच इज बीइंग अर्न थ्रू सेलिंग. एंड व्हाट इज सेलिंग? दिस इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट. हम इसी को थोड़ा अच्छे लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट. है ना? इट कैन बी टोटल आर पार्शियल. अब उसको पूरा बेच दिया, है ना, रेलवे में पार्शियली किया, ठीक है. सरकार अपने बहुत सारी कंपनियों में क्या करती है, अपनी ओनरशिप जो शेयर होल्डिंग है उसको बेचती है. भाई अगर समझिए, जो अगर किसी फर्म में के 100% शेयर हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे, इफ द टोटल शेयर, टोटल कैपिटल, टोटल जो पूंजी है कंपनी की 100% है, इसमें से मालिक कौन होगा? जिसके पास 51% शेयर होंगे. शेयर का मतलब हिस्सेदारी. दैट पर्सन विल बी ओनर हु विल हैव 51% ऑफ ओनरशिप, है ना. क्योंकि अगर इसके पास 51% होगा तो बाकी के पास कितना होगा? 49%. इससे ज़्यादा किसी के पास हो ही नहीं सकता, है ना. तो हु विल बी ओनर, who will be considered owner? Who will have 51% of ownership, or who will have 51% of share or participation. Understand? है ना. अब गवर्नमेंट क्या करे कि ये ओनरशिप गेन करने के लिए उसे पैसा खर्च करना पड़ा था ना भाई, है ना. तो जितना मान लो उसको
1 लाख रुपए खर्च करने पड़े थे। The expenditure of government was 1 lakh to get 51%। अंडरस्टैंड। अब गवर्नमेंट क्या करे कि अपने 50% शेयर बेच दे, है ना। तो वो क्या करेगी, 50,000 रुपये ले लेगी ना। समझिए, गवर्नमेंट यहाँ पूरी हिस्सेदारी नहीं बेच रही कंपनी में। गवर्नमेंट इज नॉट सेलिंग इट्स टोटल पार्टिसिपेशन, इट इज सेलिंग इट्स सम फ्रैक्शंस ऑफ इट्स ओनरशिप। तो इट कैन बी टोटल आर पार्शियल। डिसइन्वेस्टमेंट में आप ये भी पढ़ेंगे। मेरे समझाने का मतलब ये है कि दैट इनकम विच इज अर्न थ्रू द सेलिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट आर कैपिटल ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज कैपिटल रेवेन्यू। सरकार को जो अपने कैपिटल गुड्स को बेचने से इनकम मिलती है ना, जिसे हम डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश कहते हैं, उस उसी को उससे मिलने वाली इनकम को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे। समझ में आई बात। ऐसा नहीं है कि ये वर्ड हवा में, ये जो वर्ड, जो ये टर्मिनोलॉजी जो यूज की गई है ऐसे हवा में यूज की गई है। इसको यूज करने के पीछे रीजन है, बिकॉज गवर्नमेंट इज bearing some expense to creating some fixed assets or capital goods, so it is considered as capital expenditure. But is government is earning money through sell out its capital or fixed assets, then it will be known as capital receipt। बात समझ में आई, है ना। अब वो अलग बात है, इसमें हम बारोइंग और रेवेन्यू वो भी रख लेते हैं, दैट इज अनदर थिंग। ठीक है ना। अब समझ में आया, राइट नाउ क्लियर। स्वप्न आप तो समझ में आ गया ना। कैपिटल गुड इन्वॉल्व डेप्रिसिएशन। कैपिटल गुड इन्वॉल्व डेप्रिसिएशन, आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज डेप्रिसिएशन, है ना। ऑल कैपिटल गुड्स आर, ये भी आई हैव टोल्ड यू दैट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर, all capital goods are producer good, but all producer goods are not capital good। ठीक। what are the different which what are the producer goods? What are the producer goods? Those goods which are used in the production of other goods are known as production goods। वो सभी वस्तुएं जिन्हें हम किसी दूसरी चीज की, किसी दूसरे वस्तु के उत्पादन में प्रयोग करते हैं, वो क्या है, प्रोडक्शन गुड्स हैं। दिस कैन बी रॉ मटेरियल, जैसे कि ये रॉ मटेरियल कच्चे माल भी हो सकते हैं, जिस जैसे कि हम वी विल मेक फर्नीचर विद द यूज ऑफ वुड, है ना। हम लकड़ी के इस्तेमाल से क्या करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। ओके। गुड्स
used as fixed asset by producers like plant and machineries. कुछ ऐसी वस्तुएं, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे कमोडिटीज जो कि फिक्स्ड एसेट होते हैं, वो भी जो कि कैपिटल गुड होते हैं, है ना, वो भी प्रोड्यूसर क्या करता है, इस्तेमाल करता है एज अ प्रोड्यूसर गुड्स. दीज आर इन रियल कैपिटल गुड्स. अंडरस्टैंड? Producer uses two types of good. First is raw material, second is fixed assets. Are capital goods. As wood for furniture, as plant, as truck. Okay. भाई, दोनों तरह के चीजें इस्तेमाल कर सकता है. कैपिटल गुड गुड को भी इस्तेमाल कर सकता है और रॉ मटेरियल को भी इस्तेमाल कर सकता है. ठीक ना? समझ में आई बात? चलिए, अब आगे देखते हैं. अब थोड़ा अंतर बताया गया है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन गुड एंड कैपिटल गुड. कंजम्पशन गुड्स लीड डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन टू ह्यूमन वांट्स. अब जाहिर सी बात है, भूख लगी है और रोटी खाया तो भूख तुरंत खत्म हुई. इफ anybody is hungry and he gets bread, means his need is satisfied directly, and readily also. So all consumption goods lead direct satisfaction, but capital goods don't lead to direct satisfaction of wants. These are used to produce consumption goods. कैपिटल गुड जो होगी, कैपिटल गुड will be convert in consumer good. Understand? Or it will be convert in consumer good, or it will be convert, or help help in production of consumer goods, and these consumer goods will satisfy the needs of consumers. कैपिटल गुड्स डायरेक्टली कभी भी आपके नीड को सेटिस्फाई नहीं करेंगी, बिकॉज दे कैन बी
used in production process, and through the production process you will produce some consumer good. That consumer good will directly satisfy the, means capital good is indirectly, it can satisfy the need of any individual or anybody indirectly, but it can't be used directly. Understand? आपको पढ़ना, जैसे आपको पढ़ना है, तो ये चीज़ें आपको फैसिलिटेट करेंगी, पर आपको सीधे जो है सर्विस नहीं देंगे, ये बोर्ड नहीं पढ़ाएगा, ये मार्कर नहीं पढ़ाएगा. दिस विल बी हेल्पफुल टू प्रोवाइड यू सर्विस. These will be used in the process of production. Okay, means they are also fulfilling your need, but indirectly, not directly. If there will not there will be not chairs in your classes, so you have to read and write everything in standing position, and this will not very comfortable for you. अगर आपके ये कुर्सियाँ नहीं होती, तो आपको लिखना और पढ़ना दोनों खड़ा होकर करना पड़ता है, और वैसे में ये इतना सहज तो रहता नहीं. मीन्स these chairs are satisfying your need in the delivering of lecture, in getting the service of knowledge, but not these are not delivering the services of knowledge. ओके, समझ में आ रही बात? जहाँ ना समझ में आए वहाँ विदाउट हेजिटेशन यू कैन मार्क अ क्वेश्चन, और यू कैन आस्क अ क्वेश्चन. ठीक है, ओके. व्हाट इज इम्पोर्टेंट? ओके, expenditure and consumption good is called consumption expenditure. It is very important. Consumption of, sorry, expenditure of on consumption of goods is known as consumption and expenditure. And when you will observe economic survey or budget, this term would be apparent in used in that documents. भाई ये बताओ कंजम्पशन कौन कौन करेगा? दो सेक्टर करते हैं. फर्स्ट, हाउस होल्ड सेक्टर, और सेकेंड गवर्नमेंट सेक्टर. Two sectors expense on the कंजम्पशन ऑफ गुड्स, है ना? दो ऐसे सेक्टर हैं जो क्या करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बियर करते हैं. कौन कौन से हैं?
ठीक है। बा- हाँ, निजी क्षेत्र। ठीक है, परिवार, व्यक्ति, है ना। हाउस होल्ड को इकाई लिया जाता है, यूनिट, एज ए यूनिट। समझ में आई बात? वाई दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट? Expenditure on capital goods is called investment expenditure. Who will invest? What is the process of investment? Let's suppose that there is a person who is earning rupees 50,000 per month. Okay, and it's his income. This is it. This is his income. ये उसकी आय है। 50,000 रुपये महीने वो कमा रहा है ना। निवेश कैसे होगा मुझे बताइएगा, और यहीं पे सारी कहानी होगी। निवे पैसा लगाना, इन्वेस्ट। जैसे आपने फी जमा की होगी, दैट इज इन्वेस्टमेंट। दैट इज योर इन्वेस्टमेंट इन योर एजुकेशन। अंडरस्टैंड? किसी ने मकान, जिसका मकान होगा उसने मकान बनाने में पैसा लगाया होगा, दैट इज हिज इन्वेस्टमेंट। ओके। अब ये इन्वेस्टमेंट होगा कैसे? मान लीजिए हिज इनकम इज 50,000 and expenditure is his expenditure is, काफी शौकीन आदमी है, मतलब आ, काफी आ, तबीयत के रंगीन आदमी है। वो कहते हैं ना कि बड़े रंगीन तबीयत के आदमी, मतलब समझ रही हो, समझती है इसका रंगीन तबीयत का होना, मतलब मौज मस्ती पसंद करना। अब ऐसी कंडीशन में मान लीजिए कि ये हर शाम गला, सूखे गले को तर करने में 1,000 रुपए खर्च कर देते हैं। हैं? हाँ। इसका मतलब 30,000 तो वो है, वो गला गले को गीला रखने में चला गया। ओके। अब वो ऐसा है कि गला गीला रहे, तर रहे, शुष्क ना हो, है ना। उसके लिए जरूरी है कि वो साथ में कुछ खाएं भी। मतलब वो पर्सनल एक्सपेंडिचर ही क्या हो, उनका 50,000 हो। अभी मैं बात कर रहा हूँ, ही इज बैचलर पर्सन। देन सेविंग क्या होगी? अब इन्हें जमीन खरीदनी है, कहाँ से खरीदेंगे? ये इन्वेस्ट करने में पॉसिबल, ये इन्वेस्ट करने के लिए कैपेबल नहीं है। इट मीन्स देयर शुड बी सम सेविंग, है ना। तो क्या होना चाहिए? इफ ही इज हिज अर्निंग इज ₹50,000 and his expenditure is
25,000, these are per month. In this condition, his saving will be 25,000. Okay. And if he will continue this process for 10 months, he will save up to 2.5 lakh, and he will continue it for 5 years, then and he can purchase a land plot, and that purchasing, that expensing to purchase a land plot is investment. So there are two three things which are very necessary for investment. First is there should be income. पैसा ही नहीं होगा तो काहे का एक्सपेंडिचर और काहे का सेविंग. There should be income, or for income there should be employment. Understand? And for employment there should be proper economic system. भाई ध्यान समझिए, प्रॉपर इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए ना, which can provide him job, employment, chance of starting his own business or anything. And जब इनकम होगी तो it should be more than expenditure. आय को हमेशा व्यय से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए. ओके. दिस लीड्स टू saving. Means saving is equal to income minus expenditure. क्या 10 5 नहीं तो 5 7 मिनट छोड़ो, इसको खत्म करो बस. अभी इसको कंप्लीट कर दें बस, है ना. ओके. यहाँ तक समझ में आया. In only that condition, saving is possible when income is more than expenditure. If expenditure is more than income, there would be not any saving. What is saving? Saving is difference between income and expenditure. Understand? It is clear. Let's suppose that there is saving. सेविंग कौन करेगा? हाउस होल्ड करेंगे. भाई लोग करेंगे. बैंक में पैसा जमा कौन करता है? हम ही आप तो करते हैं ना.
या कारपोरेट्स करेंगे, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो करेंगे, गवर्नमेंट भी कर सकती है। ठीक है ना। अब लेट सपोज दैट यहाँ पे सेविंग है 50 लाख रुपए की, ₹50 लाख, और देयर इज एनी पर्सन मिस्टर ए who wants to invest money and starts a factory। भाई मेरी याद अच्छी नहीं है, इसको फैक्ट्री समझ लेना। he wants to start a factory, and for that purpose he is in need of 25 to 30 lakh। This is money surplus area, and this is area of need or less money area। अब मुझे ये बताइए, टिल टेल मी द फिनोमेना, कि मनी जो है वो मोर से लेस की तरफ फ्लो करेगी, या जो है लेस से फ्लो मोर की तरफ फ्लो करेगी। मनी मोर से लेस की तरफ जाएगी या लेस से मोर की तरफ फ्लो करेगी? मीन्स लेस से मोर की तरफ। अब जरा समझो, ये है वाटर लेवल ए, और ये सेकेंड प्लेस है बी, यहाँ है इतना वाटर। अब बताओ वाटर किधर से किधर फ्लो करेगा? हाई टू लो, एंड दिस इज नोन एज ग्रेडियंट। You will read this term in geography. Understand? All things follows the direction of gradient in flowing process. Either that commodity or that thing is money or air or temperature, anything, कुछ भी हो, है ना। लेट सपोज दैट दिस इज एयर, तो amount of air is more on this place, so this place is high air pressure, ज़्यादा हवा है तो ज़्यादा दबाव लगेगा ना। एंड on this place there is very less air available, so अगर हवा कम है तो दबाव भी तो कम लगाएगी। इट इज अ प्लेस ऑफ लो एयर प्रेशर। हवा किधर से किधर चलेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो टेम्परेचर भी ऐसे ही चलता है, मनी भी ऐसे ही फ्लो होती है, पावर भी ऐसे ही फ्लो होती है। ओके, तो पैसे को यहाँ से यहाँ जाना है, पर लेके कौन जाएगा? ये जाएंगे, ये एक आदमी के पास नहीं है ना।
So there should be some financial institution. Okay. Which will collect the money and distribute this money. This can be bank or other financial institutions. So for investment process, there should be income, there should be saving, there should be financial institution, okay, and there should be investor, and along with it, there should be financial inclusion. सभी लोगों के खाते भी तो खुले हों, लोग जो जमा पैसा बचा रहे हैं वो जमा भी तो करें, वो फिनेंशियल इंक्लूजन भी होना चाहिए. आफ्टर दैट investment process can take place. Understand? This is enough for today. Okay. Tomorrow I will start national income. I will provide you PDF. I hope so till tomorrow. Okay. In both medium, both languages, and the rest of topics of this chapter will be discussed in national income class in last 5 or 10 minutes. Okay. Okay.